All right, all right. Check, check, check. Welcome, welcome, people. Welcome to Ball and Banter. अमय भाई वाइट वॉश हो गया है. Bro, I've worn black. It's a black day in Indian cricket. It is a Black black day day. for Indian cricket. Black Black day for series. Indian cricket fans. What Yeah. to And the team who's won also coincidentally wears black. Yeah. So do? we've been black washed actually, not white washed by the Kiwis. Unexpected, on unexpected lines because when the series started, I think everyone expected us to whitewash them 3-0, easy route to the Yeah. WTC final, but I think ऐसा कुछ इजी होता नहीं है क्रिकेट में. तो yeah, it's been a awful series, and I think we'll see many changes post the BGT as well because I don't think even that there is much hope for us. But yeah, Hey, let's hey. see. I think before we go to BGT, right? Like I think Yeah, बहुत सारी चीजें जो हमें break down करनी पड़ेंगी. I think first whitewash ever for India, right? Like I think I was hearing in yeah, the commentary, first whitewash ever in a three match or a five match series. So yeah. काफी big deal है यार ये मतलब गौतम गंभीर first test match series at home after Bangladesh of course, but I think Yeah. बांग्लादेश को कोई seriously लेता नहीं है इतना. तो it's a pretty big deal, right? But wait, Yeah. before we dive into it, I think anyone who's joined the stream, please like this. We want more people to watch this, more people to discover ball and banter. So yeah, Yeah. uh, moving on, right? Like first ever whitewash in India, I think काफी embarrassing है. तो I don't think anticipate किया था मैंने. I thought it'll be a pretty straightforward sort of routine Yeah. series we when even after the first match that we lost in sort of Bangalore. But yeah, I think we'll quickly go over what has happened in this series. एक बारी बस देखे थोड़े numbers देखते हैं इस सीरीज के, Yes. है ना? Yes. Wait, just give me a second. We'll go through the numbers. Uh-uh. Mm, okay. Amay, are you Yeah. ready? So the Yes. first test match that took place, right? Like I think एक एक करके सारे टेस्ट मैचेस के बारे में बात करते हैं. Mm. Yeah. First test match, I think first day 46 all out, pretty Yeah. embarrassing. Even though I think here I can give them a little bit of a pass कि ठीक है, some of the conditions were against Yeah. us, Yeah. cloudy The conditions. conditions were pretty bad. So that is okay. First test match, so if you see, I don't have much of a problem because we in the second innings we did come back pretty well. Even though the partnership in the first, like when New Zealand batted, we like let them off the hook. Yeah, When we let Team Saudi score those 66, 65 odd runs. तो 65 of 73 man. 65, हाँ. चार या छक्के मारे तो उसने, पांच भाई चौके. वही My वही God. टाइम पे रोहित ने बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी दिखाई. शुड हैव लाइक gotten Bumrah, and Bumrah would have gotten him out like quite as he does usually. But अश्विन को तो पेल ही रहा था वो. आगे आके स्टेप Yeah, आउट करके छक्के मार रहा था बड़े बड़े. तब भी उसको रियलाइज होना चाहिए था कि बुमराह को लाना चाहिए था, एंड लाइक वी कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देम फॉर लाइक below maybe 350, and then we could have like driven the initiative because we scored 400 in the second innings as well, in yeah. our second innings, and we could have made a match out of it if like we would have given New Zealand a target of let's say 200 or 220. We would have won that game because they were under pressure. If you see how they started their innings, Latham, so he was gone in the first over itself, and like the ball was swinging a lot. कॉनवे भी बच बच के खेल रहा था. रचिन आया तब थोड़ा इंटेंट दिखाया उसने. बट वी कुड हैव वन दैट गेम इफ वी वुड हैव लाइक डिफेंडेड 200. But still, like I wouldn't criticize that much also because I saw good approach in the second innings. Even after so it was a good fight back if you see. So first test, I don't have much of a problem except the Yeah. captaincy bit, which was like
नया बैटर आ रहा है, उसको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रखा है, इजी सिंगल्स दे रहे हैं। तो या आई मीन क्वाइट आई एम I'm unhappy, but not as unhappy as one could have been. Uh, what happened in the later parts of the No, no, fair enough. series? I think Yeah, in the match, right, like we saw some fight, I think, which has been very typical, right? Not yeah, just this test series, I think Bangladesh वाला series भी देखोगे. फिर हाँ, earlier this year जब हमने England के against भी test series खेला था, I think हाँ, there's been a pattern, right? Like where India has gone behind in the first innings, and then we've हाँ, sort of always fought our way back into the match, which yeah, is आई मीन ये न्यूजीलैंड ने बस एक्सपोज कर दिया आई थिंक इंडिया को हाँ, दिस होल पैटर्न दैट वाज बिल्डिंग अप ओवर द लास्ट फ्यू सीरीज एंड आई थिंक न्यूजीलैंड बीइंग सच अ गुड एफिशिएंट सॉर्ट ऑफ टीम वो लोग yeah. आए और उन्होंने बजा के चले गए भाई बजा दे लाइक वो। तो व्हाट यूज टू हैपन इन इंडिया इज लाइक आपके जडेजा, अश्विन और जो भी लोअर ऑर्डर है सब रन मार के बचाते थे, ऋषभ पंत। ट्रू बट इसमें ऐसा हुआ ही नहीं है। Like whenever a lower order batter has come, they've not scored runs. And that's where we've been exposed. Because top order तो रन मारता ही नहीं है. It's like bonus runs. अगर रोहित, कोहली, या गिल ये या तीनों अगर चले, गिल has been good, but Rohit and Kohli, especially the big two, as they are called, लॉट ऑफ if क्वेश्चंस राइट yeah, if they score, then it's bonus runs. Means either the pitch is flat or मतलब bowling बकवास है, वैसा ही मान के चलो। रन्स तो आपके पंत अक्सर जब खेलता है तब जडेजा, अश्विन, वॉशी ये लोग ही मार रहे हैं इंडिया में। तो yeah, but this hasn't happened in this series, and that's why we've been rightfully exposed. ट्रू 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 आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच भी देखने के लिए जाएंगे हम लोग तो आई थिंक हाँ मिचेल सैंटनर ने तो पुणे में कंप्लीटली भाई, एक्सपोज कर दिया आई थिंक ये भैया, थर्ड मैच में मिचेल सैंटनर भी होता तो ये मैच और जल्दी खत्म हो गया ये होता तो हाँ, ये तो ये दिन में जाता ही नहीं था इतना इतना टाइम तक। he would have finished us off. Uh, so in बट या Pune, इफ वी interestingly, yeah, Pune had या gone to the match actually. I was in the stadium, and bro, Santner in that heat, he's continuously bowling 30 overs on the row, 30 overs on the row, और उस पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है। सब बस बच बच के खेल रहे, कोई प्रेशर नहीं, जस्ट कमिंग इन bowling, no one's attacking him, and like yeah, it was we let him get settled into a spell, या into a bowling spell. So that also has been a problem, and we've been badly exposed against spin. And yeah, I mean, क्यों भाई अरे रैंक मतलब टर्नर क्यों भाई बना रहे भाई? क्यों रैंक टर्नर बनाने इंडिया में? ये समझ ही नहीं इंडिया आ में रहा है। रैंक टर्नर्स मतलब ये अपने अगेंस्ट ही स्ट्रैटेजी अपने है भाई अगेंस्ट ही हो रहा ये है, वही पैट तो। कमिंस तो ये पूरा सीरीज देख के बोल रहा होगा कि भाई हाँ, बीजीटी में भी टर्नर्स बनाओ ये टर्नर ही गेंद बना टॉप दो, वगैरह हाँ, रहने दो एग्जैक्टली, टर्निंग विकेट बनाओ वही सही रहेगा वही है। उधर भी नेथन लायन, कौन, ट्रेविस हेड सब बॉलिंग डालते हैं। स्टीव स्मिथ भी आके 5 विकेट लेगा, आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे क्रिएट अ रैंक टर्न, या बिकॉज नो या डाउट या I think I want to tell whoever is there on the stream, don't forget to like this. Tell us what you think about the whole scenario in the chat. I think we would love to hear from people, whoever's joined. But या yeah, second test match अगर देखा जाए यहाँ पे summary भी I think first innings में New Zealand won the toss, came into bat. I think Devon Conway, Rachin Ravindra I think has been pretty good this या season series, right? या I think ये वाले मैच में नहीं चला अभी ये मुंबई में नहीं चला हाँ but first two matches he's been the standout batter. I think या Will Young is also another batter who's impressed me quite a lot, right? मतलब वो जब भी या बैटिंग करने आया है he's looked so composed. या I think because he played so well, they didn't miss Kane Williamson that much. Yeah, not at all, not at all. In fact, I was like saying to my friends also ki like Williamson not being there is actually a disadvantage to India, because his record in the subcontinent isn't that great, and like वो भी बहुत डिफेंसिव खेलता है, तो एक अच्छा बॉल आया तो आउट हो जाएगा। बट विल यंग एक्चुअली हैज शोन लाइक solid technique and like an attacking game Yeah, also, which has fetched him good enough runs, like sweeps, rock sweeps, जो भी है आपके reverse sweeps, good feet movement and all that. तो अच्छा खेला है वो, और he's been like one of their standout performers this true, true. series. And Yeah, he is one batsman who's like considered like a one day or a T20 batter. one But day. I think Yeah,
मतलब काफी commendable यार. I think even the new bowler that they've got, Willow Rourke, I think Belleroque, yeah, Bangalore में तो he did pretty well, but after that मतलब he looks promising. He's very young, yeah, I think 22, 23 years old. So I yeah, think they have a good sort of successor for Tim Southee over there. And Matt Henry has been again pretty good. I think yeah, he had Rohit Sharma's number this whole yeah. series. आई थिंक ये मुंबई वाले मैच में तो दोनों इनिंग्स में उसने ही आउट दोनों किया है इनिंग्स राइट में, उसको. हाँ हाँ. रोहित तो स्पिन खेला ही नहीं है सीरीज, मतलब सीरीज में तो खेला ही नहीं है भाई. आते आते ही उसको पेसर आउट करते जा रहे हैं. तो अभी भाई बोलेंगे क्या. एक एक पेसर लगाओ, साउदी हो, हेनरी हो, विलो रूप हो, उनको ही विकेट फेंक रहा है वो. मतलब सेल्फलेस इंटेंट दिखा रहा है, बट क्या क्या फायदा. वो सेल्फलेस इंटेंट नहीं, डर डर के खेल रहा है वो. उसको पता है मतलब कि हाँ, स्पेल, ये फास्ट बॉलर का स्पेल कोई रन मारने हैं, बिकॉज स्पिनर तो आउट करने ही वाला है मेरे को. आई दैट्स थिंक दैट्स लेट्स व्हाट. या I think this is a topic I think that we should spend some time on, right? या Rohit Sharma has and his captaincy through this whole series. I think ये वाले मैच में भी मुंबई वाले मैच में भी in the first innings itself we saw. I think here it was still slightly better, but पुणे वाले में तो देख रहे थे स्टार्टिंग से काफी डिफेंसिव कैप्टेंसी कर रहा था वो, या राइट? या Like fielders were out, we were not really attacking their batters. They were taking easy singles, easy boundaries everywhere. सो या तेरे को क्या लगा, मैं क्या लगता है कि आई थिंक वी सॉ some great captaincy back in the day from when Virat was captain, right? And I think we या got used to some elite standards in terms of captaincy in Test cricket. But उसके बाद से I think there has been a drastic sort of change. At least over the last couple of series, there has been a lot of change in terms of how India has been playing. तो तेरे को क्या लगता है भाई? What are your honest thoughts on Rohit my Sharma's captaincy? oh, I think like it's we are going back to, those peak Dhoni test eras in like overseas conditions where there has been defensive field और opposition मार रहे 500 रन टाइम पास के लिए मार रहे हैं. इंग्लैंड Yeah, ऑस्ट्रेलिया जाके उधर माइकल क्लार्क ने भी ऑस्ट्रेलिया में मारे थे कुछ 300 रन. उसके बाद 200 रन भी मारे थे. वैसा ही फीलिंग आ रहा है. बाउंड्री पे फील्डर रखे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इजी सिंगल्स, यू नो दैट्स व्हाट. एंड इवन लाइक how Kohli used to be, वो bowling yeah, captain था. I think he was like a bowlers captain. Like true, हमेशा true. crowd को cheer up कर रहा है, bowlers को cheer up कर रहा है. I didn't see any of that in that Pune test match. Like no one was even trying to, uh, like amp up the crowd, because crowd also can play a big role in Yeah, yeah, sport. yeah. Like they can cheer you up and the team can be, charged up as well. And that's what Kohli has done overseas also. I remember that one test match, I think in England, where like 60 overs of hell उसने बोला था, and we True, won that true. test match. I तो think वैसा even कुछ. या even जब उसका पूरा झगड़ा चल रहा था बीसीसीआई के हाँ साथ हाँ and like this whole हाँ issue with Saurav Ganguly was going on, I think that series that we were playing in South Africa, even though या जब मिडवे केएल राहुल को कैप्टनसी यस दे दी थी, यस बट उसके यस अंदर भी when he was like probably not as committed as a captain, you could see that fight, right? Like वो फिर भी या राइल अप कर रहा था साउथ अफ्रीका को, हाँ, अपने टीम को टीम को. मोटिवेट कर रहा या था. तो आई थिंक दैट फाइट हैज बीन लैकिंग डेफिनेटली. मुझे एब्सोल्युटली. भी वो फाइट इतना दिखा नहीं अभी ये सीरीज के अंदर, अनफॉर्चुनेटली. आई थिंक इसके पहले जब बांग्लादेश भी आया था, बांग्लादेश भी काफी आई थिंक फर्स्ट मैच में पास आ गया था इंडिया को एक्सपोज आ गया करने था, के. बहुत आ बट गया, वही बांग्लादेश तो. का आई थिंक लेवल ही इतना खराब है इन टेस्ट हम्म. क्रिकेट. आई डोंट थिंक दे आर अ कॉम्पिटेंट टीम. तो वो लोग कुछ ज्यादा कर नहीं पाए. बट न्यूजीलैंड ने तो भाई पूरा नंगा कर दिया इंडिया को. नो डाउट अबाउट इट. Yeah. या सो मूविंग ऑन, रोहित शर्मा कैप्टनसी, इवन आई थिंक इंडिया को देखना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म टेस्ट कैप्टन. चल And he's जस्ट old also. He's getting old also. He's like some 37, 38, I think now. या So we need a successor. Like, और कोई है नहीं वैसे, मतलब natural successor. There's Bumrah, but the Bumrah doesn't play एवरी home मैच. tests. या Yeah, he doesn't, or rightfully so. Obviously, he needs the rest because या his body is also like you need to safeguard it. I think And it a three has to be format a player. batter, So right, who will yeah, play all matches. I think yeah. I don't I know mean, there's कौन है there's भाई. Shubman Gill, but शुभमन Shubman Gill गिल, में भी बट वो aggression आता नहीं है, दिखाई नहीं देता है. There's मतलब you Rishabh don't Pant. know tactically how good he is yet Yeah, in Test cricket, right? I think Rishabh Pant could be an option over there.
Would be a in the Rishabh Pant, future. yeah. But Rishabh Pant का भी captaincy credentials थोड़ा questionable है at this point of हाँ. time. And we Uh, don't want him to, go into that defensive yeah, mode when he's captain, take responsibility or whatever, he because is our, he's undoubtedly he is our yeah. best batter on भाई form, right? न्यूजीलैंड की फट गई थी जब वो बैटिंग कर रहा था. सही में, जैसे ही सही में. जैसे ही आउट हो गया तब उनको पता चला चलो सब क्लोज इन डाल देते हैं. इजी एक तो ये सिंगल मिल रहे थे भाई, इजी सिंगल दे रहा था और वो सबकी फटी थी कि ये तो टेक अवे कर रहा ही है गेम. what एंड did इवन you दैट think about डिसमिसल. that decision? नो ब्रो, यू हैव टू गो टू द बैट्समैन फेवर बिकॉज लाइक बैट पैड को लगा था. तो भाई हाँ एंड मतलब द it was, अंपायर कॉल वाज आल्सो नॉट आउट, सो यू हैव टू probably go with that because it was very inconclusive. So I मुझे भी think लग रहा था कि मतलब आउट नहीं भाई देंगे, बट वो उधर आउट दिया तो लाइक दैट वाज लाइक अ गेम yeah, चेंजर, राइट? that was a लाइक game changer. Yeah, I mean अदरवाइज आज का मैच खींच लेता ऋषभ पंत, एंड he's still लेता है. एटलीस्ट इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वी वुड हैव बीन एक एक वन वन विन लेस. One glimmer of hope. Yeah, बट या व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एज बैटर्स? आई थिंक ये सीरीज देखेंगे तो जो भी बैटर्स ने अपने परफॉर्म किया, इट्स ऑल द यंग बॉयज, राइट? लाइक either yeah. Sarfaraz in the first match, Rishabh Pant throughout the series, then who Shubman Gill came through, Human Gill, yeah. Yashasvi also came through every now and then. But I think it's the experienced batters, right, जो नहीं कर पा रहे हैं. मतलब आई थिंक बुढ़ापा कैचअप कर रहा है दोनों रोहित और विराट के साथ. Could be, bro. विराट को तो क्या हो गया है भाई? विराट कोहली लुक्स लाइक अ Yeah, शेल ऑफ हिमसेल्फ. मतलब वो ऐसे लग रहा है भाई किसी ने विराट कोहली का क्लोन भेजा हुआ है, who's just going through the motions. I मतलब mean after he lost the captaincy उसका फॉर्म वैसे ही, he's either not या motivated enough to play test cricket because ODI is fine, T20 also, IPL खेल रहा है वो, मार रहा है रन उधर. ODI also, ODI तो I don't have any doubt of Kohli, but test हम्म format especially at home उसको स्पिन जम ही नहीं रहा है. वो जैसे ही रन आउट हो गया था फर्स्ट इनिंग्स में इधर मुंबई में, you could see he doesn't want to play spin. That's why he just wanted to take that single फट because वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आए, he'll see the day off and yeah. हाँ, बोलते रहे. हाँ, तो he'll somehow see the day through. उसको actually is scared of playing spin. Even the wicket against Santner full toss पे वो डर डर के उसको लगा मार मार के मैं थोड़े रन तो बना दूं. I तो yeah, I mean, mean yeah, that it's a genuine concern, but I think in Australia, somehow he gets fired up because even the crowd is quite vocal there and थोड़ी स्लेजिंग वेजिंग हो गई तो उधर रन मार देगा वो, मेरे को लगता है. So I don't know, at man. I least, think yeah, we are gonna get badly exposed. But yeah, we'll get to that yeah, topic also. yeah, But yeah, my thoughts also, right? मतलब Virat Kohli has always been this batter for India who has had this aura about him, right? मतलब yeah. वो आता है तो no matter what the situation is, you still Hmm. believe कि okay, भाई विराट है, कर लेगा कुछ. But against spin, he's just been like found out badly exposed. Yeah, yeah, मतलब किस अभी वाले इसमें अजाज पटेल गॉट हिम आउट. फिर रन आउट्स डूड इन द yeah, पुणे टेस्ट यू सॉ लाइक ही केम आउट, yeah, ही लुक प्रीटी चार्ज्ड अप, राइट? yeah, बट ऐसे इम्पेशेंट लग रहा था, लाइक इट डिडंट लुक लाइक ही वांटेड टू स्टिक अराउंड. एंड दैट फुल yeah. टॉस दैट ही गॉट आउट ऑन अगेंस्ट मिचेल Gambhir. सैंटनर, playing a sweep shot, मतलब so uncharacteristic Yeah, for a Virat Kohli to do that. Quite surprising, quite surprising. yeah. I don't know where I think both of them are coming towards the end of their this thing, right? Teko kya lagta hai? Does Virat Kohli still have one more peak left in him? I think Australia he will perform Hmm. because there you don't get much of a spinning track unless it's J5 or something. Yeah, Pace के सामने I think Kohli is still okay, good enough. But it's spin. when it spins, I think he's as good as a number 9 batter at this stage. So yeah, at least in the test format. Even in Sri Lanka in the one day series, he got exposed there. Yeah. Yeah, उधर भी कुछ रन नहीं मारे थे उसने वनडे में when the ball was turning. So when the ball turns, he is like a bunny of sorts at this stage. But I think True. against pace, he's still quite good. So I Still have got it. hopes that, yeah, I have hopes in BGT. Like
if the ball is not turning, अगर ऑस्ट्रेलिया टर्निंग पिच बना दे तो थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा अपने को, बट बट आई क्या डोंट लगता थिंक, हाँ, आई थिंक बीजीटी में तो अच्छा करेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ 400 रन्स सीरीज फ्रॉम कोहली। एंड इसके बारे में क्या लगता है, लाइक नाउ विराट कोहली हैज बीन चेजिंग दैट record, right? Like Sachin's record, या be it या I think in the test batting pecking order, Joe Root has surpassed, I जो think, रूट है सरपास्ड, या all the batters, right? Like I think या Steve Smith, Virat Kohli, दोनों अभी same boat में है, where like both of them are हाँ, kind of at the back end of their स्ट्रगलिंग, career, या kind of struggling. Kane Williamson has also fallen off since a while. या So I don't विलियमसन know. तो होम ट्रैक बुली ब्रो, ही जब भी घर पे ही खेलता है वो, उसका स्ट्रैटेजी आई थिंक ही प्लेज एट होम, ओवरसीज ही मेक सम एक्सक्यूज ऑफ नॉट प्लेइंग, तो उसका वो एवरेज भी, Like मतलब इज Bobsy एवरेजिंग the 58 King. और सम, लाइक बॉब्जी द किंग, बट एट होम ही इज लाइक किलिंग एवरी टीम्स। उसका एवरेज कुछ तो 80 90 है होम पे, तो ही इज लाइक किलिंग इट एट होम। तो या, बट जो रूट इज लाइक इन अ लीग ऑफ हिज ओन, Yeah, बट या द अदर I think थ्री he आर is लाइक काइंड ऑफ, running away with या it right now. या ठीक है, मूविंग ऑन, टेल मी, भाई ये गौतम गंभीर एरा के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, राइट? ब्रो, जीजी एरा हैज स्टार्टेड जंजीरा, ऑफ in a rocky manner. I think पहले उधर श्रीलंका में जाके हार के आ गए. What a ODI series loss after some 20 something years. 28 years or something, yeah, या yeah. देन फिर क्या कहते हैं, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट चलो बच गए, बट ये फर्स्ट एवर वाइट वॉश इन अ टेस्ट सीरीज फॉर इंडिया अंडर गौतम गंभीर दिस थिंग. सो क्या, व्हाट आर योर थॉट्स ब्रो, क्या लग रहा है? Bro, it's been an embarrassing start. I mean, या you can't get a worse start than this. And I don't know where the problem is. Like, is there some internal problem there? Because this is like the Dravid Chapel era type thing, you know? Dravid Chapel में भी ऐसे ही कुछ भी चल रहा या था. So yeah, I mean, it's like that. And the problem is that he was not even the coach of KKR. He was a mentor. He was not या the actual coach. एग्जैक्टली. So he's like a तो mentor, and so I don't know. And T20 if you see T20 में तो पेल रहे हैं हम लोग, but I mean they are all home series. So अभी देखते हैं अभी साउथ अफ्रीका में कैसे करते हैं. मुझे भी यही But लगता है यार कि मतलब हाँ, we got him in on the credentials that he had built in T20, right? yeah, But handling a national side, test yeah, cricket, one day cricket, it's a completely different ball game, right? completely different. If Yeah, you look at someone like Rahul Dravid, who was there before Gautam Gambhir, yeah, he yeah, had gone through the ranks, right? उसने वो yeah. पूरा ग्रास रूट क्रिकेट से लेके Grassroots, अंडर yes. 19s. So he was India, yeah, groomed as a coach over a period of time. So he yeah, knew what to do. Even Dravid also had some hiccups in mm. the beginning, Yeah, yeah, but I yeah. think he did deliver results and like came pretty close to winning. Apart from the T20 World Cup, also 50 over World Cup, we played great cricket over Absolutely, there. And like absolutely. Yeah, एक बस फाइनल में थोड़ा अपना मिसहैप हो गया, अदरवाइज वो भी that's okay. जीत ही That's सकते थे. okay. Yeah, yeah, But yeah, and before that, if you look at Ravi Shastri also, Ravi Shastri तो has that whole aura about him, और yeah, right? Uh, अगर वो कुछ कोचिंग भी नहीं करता होगा, just on the sheer skills of like motivating players yeah. or like getting I them up for a yeah, fight, I think unmatched है वो. रवि शास्त्री का वो स्किल तो I think वो उस पे अकेले पे ही वो yeah. पूरा ले जाता था. So तो that's what right, happened, right? Virat insisted for Ravi Shastri because of this reason only. yeah, Like Ravi Shastri was a great man, manager, motivator. yeah, Either like he knew how to manage egos, because Indian cricket में egos manage करना is the biggest thing. And I correct, think correct. that's where GG is struggling, because GG himself has a big ego, and there are other egos in the team as well. Because so I think there is some internal thing that is happening, clash of egos or whatever you want to call it. और ऐसा भी नहीं कि गंभीर को सपोर्ट नहीं किया, उसको अपना बैटिंग कोच दिया है, अभिषेक नायर दिया है, सब मॉर्ने कुछ मॉर्कल भाई, दिया पूरा है, पूरा क्या सपोर्ट स्टाफ उसका ही है. सपोर्ट स्टाफ दिया है. सो देयर इज रायन नो एक्सक्यूज टेंडुलकर, हियर. रायन टेंडुलकर ब्रायन ने अपने टेंडुलस्कार, सपने में या नहीं सोचा होगा कभी कि या वो इंडिया का असिस्टेंट या को मतलब कुछ असिस्टेंट होएगा कोच, इन एनी या कैपेसिटी. तो या. So वो this is not उधर franchise cricket, this is international cricket. So वो like I think we rushed the decision too much या आई to थिंक वो give him the वाइब्स job. वाइब्स के Yeah, ऊपर Vibes एकदम FC. Yeah,
सब लोग ने पूरा बोले कि वाइब्स है। भाई अभी जीजी आएगा तो सब जी कुछ जी जीत आएगा, जाएंगे। वी हाँ। माइट स्टिल विन ऑल ऑफ दीज थिंग्स अंडर हिम, मे बी ये टीथिंग इश्यूज होंगे अभी स्टार्टिंग में, एंड समझेगा इट माइट गो आइदर ऑफ द टू वेज, राइट, लाइक आइदर एकदम या अभी बॉर्डर गावस्कर नीचे डाउन अंडर वील गेट completely bashed, and or we might turn it around. Let's see what happens. But yeah, even I think अभी मुझे सोच के ऐसा लगता है यार, गौतम गंभीर अगर अभी भी ये टीवी पे आ रहा होता, पंडित होता, भाई वो हाँ, तो जो भी अभी कोच होता उसको नंगा कर देता हो एकदम। नंगा कर देता, नंगा कर देता। उसने रवि शास्त्री को भी गाली दी थी, उसने बोला रवि शास्त्री ने जीता हाँ, क्या आज तक, व्हेन रवि व्हाट शास्त्री हैज इज ही वन अ वर्ल्ड अचीव्ड, कप ब्रो। एंड वर्ल्ड कप एंड वॉट एवर रवि शास्त्री के अंडर या इंडिया में, इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट या मैच, इंडिया वाज टेस्ट मैच, इनविंसिबल, राइट, इन इंडिया। या भाई कोई वी वन चांस ही टू नहीं था। टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग टू टेस्ट अबाउट? सीरीज इन टू ऑस्ट्रेलिया टेस्ट अंडर रवि केम, शास्त्री, सो क्या कहते हैं, इंग्लैंड को भी ऑलमोस्ट ले ही लिया था हमने। वो ऑलमोस्ट, एक टेस्ट या मैच अगर पोस्टपोन या नहीं होता कोविड की वजह से, वो उनको इंग्लैंड में भी हरा देना था हमने। या बट प्रिटी इंटरेस्टिंग। सो या ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट आवर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सिनेरियो, राइट। अभी आई थिंक जो सिनेरियो है उसके हिसाब से, for India to go ahead straightforward, right? Wait, let me just share an article with all our viewers, and we can discuss it along with them, right? Uh, या just a second. Yeah. So if we look at it, right, like अपना जो 3 मैच टेस्ट सीरीज है, if we would have या won this test match in Mumbai, तो हमें बॉर्डर गावस्कर सीरीज में आउट ऑफ द 5 मैचेस 3 और जीतने पड़ते हैं। हाँ, But I think now we have to win 4 out of 5, 4, या which is oof, which is impossible. even I think it's impossible. अगर वो होम सीरीज भी होता ना, even then it was very tough. Even if it was a home series and we had to win 4 or 5, even yeah. that I would have called tough. This is impossible. I think it would be the Oof. greatest ever achievement by any team if we win 4 test matches in Australia and qualify for the WTC. So I think Abhi, this So is what the yeah, points table looks like, right? yeah, Australia is right on top, while India is here. It's the win percentage which matters, right? And yeah. I think we are, after this loss, तो अब chances काफी कम हो गए. I don't think India is going to make it, but let's see. I think New Zealand is going to play South Africa, right? Or South. No, I don't know who they're. I think England or some. I'm not sure who they're playing. But South Africa is playing Sri Lanka and Pakistan both at home. So it's like 2-2. Oh, Yeah. So I think वो तो रगड़ देंगे दोनों टीम को. I mean कुछ कह नहीं सकते, but they are the heavy favorites to make it to that WTC final. and for Australia, I think if Australia wins their Test series against Sri Lanka 2-0, uh, Yeah. they'll be as good as into the finals. Yeah. आई थिंक न्यूजीलैंड का भी अभी थोड़ा सा रिवाइवल हो गया हाँ. है, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका सीम लाइक अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द Yeah. WTC फाइनल। बट या, इंडिया के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आगे जाना है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 में से 4 मैच, 4 तो जीतने ही होगा. Yeah. एंड विच वी हैव नेवर डन। आई थिंक इवन व्हेन इंडिया हैड वन द लास्ट 2 सीरीज, हम लोग कितने, एक तो हमने 2-1, 3-2 जीता था, 2-1, एंड नो, 2-1 is I think. Both were 2-1 I think. I'm both not were sure. 2-1. Both were 2-1. So, Yeah. so yeah, same stuff, man. I think we can Yeah. comfortably say that this World Test Championship final is gone. But Yeah. yeah, such a surprising thing, right? Like South Africa, a country which has deprioritized Test cricket completely. Absolutely. Absolutely. उन लोग ने Suddenly, तो वो अपने, लोग खेलने जाने वाले हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो फाइनल। वो न्यूजीलैंड टूर जब उनका था कुछ, तो दे हैड देयर ओन लाइक IPL, व्हाटएवर दे हैव दैट SAPL या or whatever they have, SAPL। see SA T20 or whatever they call हाँ, it. They had rested all their players and they, न्यूजीलैंड में उन लोग ने yeah, सम दे हैड सेंट सम second, टीम yeah, जिसके अंदर some भाई C एक team they एक had प्लेयर sent, का नाम नहीं पता था किसी का। C team भेजी थी, बिकॉज सब उनके रबाड़ा वगैरह सब इधर खेल रहे थे SA 20 में.
So like very shocking how they are still in contention because they drew against us Yeah, when we went there. Uh, and they've been, I don't know, like underrated performance kar rahe hai South Africa. Even they smashed Bangladesh in Bangladesh, bro. that is true. Like, That is pretty tough, yeah, right? Like, yeah. I thought कि especially उधर for हार जाएंगे वो लोग. non-Asian teams to go to Yeah, Bangladesh and beat them, yeah, it's very tough. But I think Keshav Maharaj put in like very good yeah. And performances for them over Rabada, bro, there. Rabada was, Rabada, bro, he's on fire there. Like number one test bowler हो गया अभी वो number rankings one में. test bowler. भाई Yeah, कितना उसका strike rate is some 20 or something. I I think everyone 300 talk wickets, 300 300 test wickets. wickets, bro. That is like, That is insane. yeah, And that too yeah, playing for a country that doesn't play as many test matches, yeah, right? Like, yeah. I think India, England, Australia still play a lot of test cricket. South Africa doesn't play as much, Very much. which is Yeah, a shame. I think they have a pretty good team, right? And I think yeah, जब भी South Africa में कोई भी series होती है, it's always very spicy. yeah, yeah. But yeah, we all talk about Jasprit Bumrah being like the premier bowler, but Rabada has been killing it in Test Killing it. cricket. Yes, No yes. doubt, no doubt. ठीक है, चलो जल्दी से अपन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में बात करें क्या? हाँ. क्या है अपना टीम, क्या लग रहे हैं चार? तो इफ वी लुक एट द स्क्वाड, Squad. Yeah. आई थिंक दिस इज व्हाट आवर स्क्वाड इज फॉर द 5 मैच सीरीज. एक तो ये 5 मैचेस Yes. कैसे खेल रहे हैं भाई, 5 मैच. अभी 5 का तो रूल ही हो गया ना. आई थिंक दे इवन इंग्लैंड सीरीज इज 5 मैच सीरीज. सो दैट इज ओ ओके. Yeah, I quite like that because you need like more test cricket because नो नो, सबको आई लाइक इट, लाइक देयर इज yeah, नथिंग टू yeah, नॉट लाइक, yeah, बट अनयूजुअल. ठीक है, yeah. तो भाई अपना शर्मा शर्मा तो नहीं है ना पहले मैच के लिए, आई शर्मा थिंक. एक मैच के लिए नहीं है शायद. आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच इज नॉट देयर. सो हु डू बुमराह यू विल बी थिंक विल मोस्ट. लाइक कम इन फॉर हिम टू ओपन? आई थिंक ईश्वरन वही ओपनर है अभी स्क्वाड या में. सो आई थिंक ही विल ही प्ले इज किलिंग अनलेस. इट इन डोमेस्टिक Yeah, क्रिकेट राइट yeah, अभी. unless they make KL Rahul open, that also could be an अरे option नहीं because भाई, with Gambhir you never know क्या मतलब किसको भी वो वॉशिंगटन सुंदर से ओपन करवा ले भाई, कुछ पता नहीं आई है. डोंट माइंड, आई वुड टेक Yeah, वॉशिंगटन सुंदर ओवर yeah, केएल I'll राहुल also एज take एन ओपनर. because he's pretty solid. अच्छा या खेलता है वॉशी तो. ये बट वाले या आई मैच में भी थिंक भाई फर्स्ट इनिंग्स में क्या मस्त खेल रहा था या न्यूजीलैंड उसने के तो अगेंस्ट उसने वॉशी. काउंटर किया भाई. उसने काउंटर अटैक किया तो 30 रन मिल या गए कैसे. तो वरना अभी तक 200 चेस करना पड़ता था वैसे भी. तो या इट कुड हैव बीन अ मोर एम्बैरेसिंग डिफीट. तो या आई थिंक ईश्वरन माइट ओपन बट देन ईश्वरन आल्सो लाइक पुजारा ओनली. वो थोड़ा स्लो प्लेयर है. टिकाऊ अरे प्लेयर है. सो चलता है लेट्स ब्रो. सी. आई थिंक वैसा ही चाहिए सी एक्चुअली टू वी नीड समवन कॉम्प्लीमेंट. लाइक द या, एग्जैक्टली. या, मतलब ऑल ऑफ देम कांट बी लाइक, सब लोग ऋषभ पंत और डैशर्स. सरफराज के जैसे बैट नहीं कर सकते, राइट? या, या, सो या चलो ईश्वरन कम्स इन. व्हाट इफ लाइक इन या. द फर्स्ट मैच ईश्वरन कम्स एंड हिट्स अ सेंचुरी ब्रो ऑन डेब्यू? फिर क्या वापस नो, आके किस ना ना भाई, वो करुण नायर को 300 के बाद बिठाया था इधर. मतलब आई डोंट थिंक दे. या. करुण नायर तो स्टिल आई थिंक इट्स अ ट्रेजेडी. या. But yeah, whatever. It's a mystery that no one has been मिस्ट्री able है. to solve. ठीक है, तो यशस्वी हो गया, ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान. What do you I don't think, think dude? Sarfaraz will play. I don't think Sarfaraz will play. I think they'll go with KL Rahul. Yeah, Uh, even I and think that. one spinner could be either Jadeja or Washi, and they'll go with. I think they could give Nitish Kumar Reddy a debut. I don't know. He could be like that Sardul Thakur type third seamer or fourth seamer. बट पता नहीं Yeah, यार, मतलब उसने अभी तक कुछ खेला नहीं है खेला नहीं है डोमेस्टिक but में भी. डोमेस्टिक yeah, में भी ही इज फर्स्ट क्लास. उसने कितने 8-10 नहीं मैचेस ही नहीं. खेले हैं उसने, सो लाइक. हाँ वो he's like that project player. I think like the next या हार्दिक पांड्या जो हम लोग कब से जब हार्दिक पांड्या से डेब्यू के बाद ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट हार्दिक पांड्या. और अभी तक कोई क्लोज भी नहीं है उसके. मतलब नीतीश कुमार रेड्डी इज अ या गुड बैटर, बट बॉलिंग उसका स्टिल इज लाइक बॉलिंग. हाँ. एवरेज, या प्रीटी एवरेज ओनली. प्रिटी लाइक हार्दिक एवरेज. पांड्या कैसे, हार्दिक पांड्या के दोनों डिसिप्लिन्स आर वेरी क्लोज या एट अ वेरी सिमिलर लेवल.
अगर Yeah, उसका he can he's a bowl 140 bro. He can bowl या 140 प्रॉपर बॉलर कर सकता, बॉलिंग कर सकता है वो। तो uh, बट ठीक है, लेके जा रहे हैं तो लाइक प्रीटी yeah, इंटरेस्टिंग। भाई ये प्रसिद्ध कृष्णा को लेके जा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का भी प्रसिद्ध पता नहीं, कृष्णा। समझ नहीं आता। लाइक उसको बहुत चांसेस, लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दिस गाय, बट Yeah, आई डोंट नो। he's tall, no, he's tall. That's why, and थोड़ा pace है। I would want to see Harshit Rana play because he can bat a bit also, और वो ओ या, बड़े बड़े छक्के छक्के मार सकता है एंड ही हर्षित हैज राणा। दैट, ही इज दैट कैरेक्टर He's got, राइट, yeah, मतलब he's got pace also and aggression मतलब also। ऐसे, हाँ Yeah, थोड़ा है दिल्ली का कुछ लौंडा है ना, थोड़ा स्पाइसी दिल्ली का लौंडा स्पाइसी, मजा है। आएगा, थोड़ा एक दो हाँ, सेंड ऑफ थोड़ा देगा वो स्लेज, ऑजी हाँ, बैटर्स को, he'll या ruffle up some feathers, so I would थोड़ा like to see स्लेज वेज करो, थोड़ा स्लेज हर्षित वेज राणा वो कम इन। चाहिए। Who भाई else इसके बारे man? में बात करते हैं यार, मोहम्मद सिराज। Yeah bro, मोहम्मद सिराज he has ऑफिशियल, been, डीएसपी सिराज क्या हो गया bro, भाई जब it's, से? I don't think ऑफिशियल आईडी खेल रहा है, फेक आईडी खेल रहा है उसका। वो फेक आईडी खेल रहा है एक्चुअली। इम्पोस्टर, कोई या इम्पोस्टर इम्पोस्टर खेल आके रहा है। जगह जगह ले लिया उसका। ही ही इज लुकिंग सो लैकलस्टर ब्रो, बस आता है, बॉल डाल रहा है, जा रहा है वापस। लाइक देयर इज बॉडी नो लैंग्वेज लाइक, ओनली लुक्स या ऑफ, लाइक वंस अगेन वो ब्रो, वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोहली के अंडर इफ यू सी सिराज, हाउ पम्प्ड अप ही वाज, हाउ या पम्प्ड अप ही यूज्ड टू बी। विकेट नहीं मिल रहा है फिर भी वो पम्प्ड अप अग्रेशन दिखा रहा था, बट नाउ इट्स जस्ट, आई डोंट नो, इट्स बीन जस्ट फ्लैट एवर सिंस द ओडीआई वर्ल्ड कप हैज कंक्लूडेड। लाइक उसमें भी थोड़े परफॉर्मेंसेस नहीं आए थे, बट पोस्ट दैट वो एशिया कप का स्पेल याद है कितना अग्रेसिव था वो, मतलब सही कितना में अग्रेशन दिखाया था उसने। आई फील लाइक इट्स बीन फॉरएवर या सिंस आई हैव सीन आफ्टर सिराज बोल दैट, लाइक दैट। आफ्टर दैट इट्स बीन ऑल फ्लैट, लाइक ही इज नॉट लुक थ्रेटनिंग एट ऑल। But I think तो one या saving grace has been seeing Akashdeep bowl. I think या Akashdeep आकाशदीप हैज बीन क्वाइट seems गुड, like a nailed on sort नेल्ड of ऑन, pick for the Indian या team. I think ऑस्ट्रेलियन पिचेस भी उसको बहुत सूट करेंगे, वो पटकता या है बॉल पिच पे। पटकता बॉल, हाँ। तो विल एंड मिस ही शमी bowls दो, at a good pace, विल मिस सही में शमी, शमी विल is मिस a शमी, या big huge miss. I mean, And yeah, Bumrah will need some support. The Bumrah भी 5 टेस्ट मैच, I don't know if his body नहीं can, खेल पाएगा यार yeah. तो कोई भाई, तो वो he'll someone else get has to run step into the up. ground, 5 टेस्ट Yeah, मैच खेलेगा वो बैक टू बैक, yeah. तो And you we don't want shouldn't। that because तो आई that थिंक World Cup फास्ट is बॉलर्स pretty में तो important. इनको सबको चांस मिलेगा भाई, हर्षित राणा हाँ, भी आएगा एक दो के लिए, I प्रसिद्ध think कृष्णा भी आएगा। रिजर्व में से भी कोई ना आएगा तो मुकेश कुमार और वन ऑफ देम माइट कम। मुकेश कुमार ने ए टूर में अभी काफी विकेट लिए, छह छह विकेट लिए एक मैच, एक इनिंग्स में। या मुकेश कुमार आई डोंट माइंड, आई थिंक इज अ या स्टेडी या स्टेडी बॉलर राइट, लाइन लेंथ he's वो like पकड़ के that रखेगा। he's like that भूवी भूवी जैसे एक लाइन पकड़ के डालता है या 130 100 135 सस्ता की मूवी। स्पीड पे। हाँ, या सस्ता भूवी। या बट या लुकिंग एट द स्केड्यूल ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी राइट, आई थिंक जाते ही पहला मैच अपना पर्थ में, और भाई साहब। पर Perth actually I don't know, we've done well in Perth historically I think, and even या Australia I think they struggle in Perth, I'm not sure. The आई second थिंक one is फर्स्ट the बोथ मैचेस राइट, लाइक एडिलेड भी अपना वायराज Adelaide कोहली भाई। का नहीं, बट गुड एडलेड मेमोरीज। कैसा है, लास्ट टाइम डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, 36 ऑल आउट, ओ या and this time सम also बैड मेमोरीज। yeah, so that is a bad memory. गाबा अगेन आई डोंट नो, क्या फिर से गाबा का कमर तोड़ेंगे, बट इधर रियलिस्टिकली वॉशिंगटन लास्ट सुंदर को टू, लेके आ जाओ, बस हाँ वॉशिंगटन उधर सुंदर कर वॉशी देगा वॉशी काम। को खिला उधर। लास्ट टू रियलिस्टिकली वी कैन compete, मेलबर्न एंड सिडनी, because I think we can come Sydney, तो we should be able to compete because those are like typical Indian type conditions there. या बॉल थोड़ा सा होता है स्पिन, बट आई डोंट नो नाउ हाउ आवर प्लेयर्स कैन प्ले द स्पिन, बिकॉज वो लोग भी इधर आए थे, उन लोग 3 स्पिनर लेके आए थे एंड दे हैड कॉज्ड अस सम या ट्रबल, बट देयर अरे बैटिंग भाई, अनफॉर्चुनेटली फेल्ड। तो इंडिया तो ये जो भी स्पिनर्स हाँ, आते वो लोग वेट हाँ, करते होंगे कि भाई इंडिया टूर हाँ, कब आएगा, इंडिया टूर कब आएगा यार। श्रीलंका टूर कब आएगा, आई विकेट्स मीन मिलेंगे। वो सैंटनर पार्ट टाइम क्रिकेटर है भाई, फुल टाइम गोल्फर है, उसके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है वैसे। पार्ट टाइम बॉलर को आप अगर इतना 12-13 विकेट दे रहे हो एक मैच में, तो क्या मतलब, सही में। क्या तेरे क्या को क्या होगा। लगता है, इंडिया खिलाएगा क्या, 2 स्पिनर्स खिलाएगा वहां पे बीजीटी में? आई डोंट थिंक पर्थ में खिलाएगा, आई थिंक दे माइट प्ले देम इन मेलबर्न और
Sydney, Melbourne and Sydney, and Adelaide also maybe. But Adelaide is Interesting. a day and night test, so we never know what can happen there. Ash, what do you think about this guy also, bro? I think one more thing we missed out on discussing from this series, Washington Sundar coming in and sort of showing up, Yeah, he's Ravichandran, been Ashwin and Jadeja, right? I think same pattern jo batting may be that the young ones are showing up yeah, on the experienced players. I think Washington Sundar also coming in and bhai, matlab he outbowled, at least in the yeah. Pune test, he Oh outbowled yeah, them he completely, was right? superb. Yeah, Uh, even ये वाले मैच में Ravindra Jadeja still got some wickets, but again he outbowled like overall like outbowled Ashwin in the yeah, whole match. Ashwin की तो फट रही होगी भाई देख के कि ये तो मेरे से बेटर बैटिंग भी करता है, लेफ्ट yeah, हैंडेड बैटर भी है, can bat in the top order, lower order anywhere, yeah, and now bowling also seems to be sort of outshining him at least in the yeah, two matches they've played together. तो क्या लगता है yeah. तेरे को? But Ashwin का तो unlucky है bro. मतलब एक one bad series and he's been under the scanner. But the problem also is that the thing is कि अभी he is also getting old and overseas तो He's खेलता नहीं है 38, वो. bro. हाँ. Yeah, so he's getting older. Last series, in fact, he was man of the series. So against Bangladesh, this has been like his one bad series. But then the problem is that he doesn't play overseas. So the next home series will be after a year or something, and then he'll Yeah. be like 39, close to 40. So I don't know if कितना fitness होगा, कितना motivation होगा to play. But yeah, we are lucky that we found Washi this series. वरना तो भाई problem कोई replacement ही नहीं है अश्विन का. नहीं, तो सक्सेशन प्लान अभी प्रीटी क्लियर सक्सेशन है, प्लान राइट? लाइक या जड्डू भी कितना, जड्डू भी नाउ ही इज 36, राइट? तो या जड्डू के लिए अक्सर है, या अश्विन के लिए वॉशी है. but तो Jaddu is आई quite थिंक fit so Jadeja can play for like 2 more years. I think he's quite fit या that way. वो वैसे भी And T20 भी नहीं खेलने वाला है अभी. हाँ वो तो T20 ओडीआई I भी think सिलेक्टिवली ODI खेलेगा. maybe I don't know if they'll play him because Aksar is quite better than him in ODIs, so I ट्रू don't know ट्रू. if he'll play ODIs that much. But yeah, Ashwin I think आ जाएगा अभी एक YouTube message something. He'll do a YouTube live and announce his retirement. I feel थोड़े टाइम ऐश अन्ना, थोड़े से ऐश की ऐश बात. ऐश की बात. But he's been a legend bro of Indian cricket. No Like doubt, no no doubt. I doubt. think as fans we have a very short memory, right? Like अपन भूल Yeah, जाते हैं बहुत जल्दी. सबसे जो yeah, नया अभी हुआ होता है वही याद होता है अपने को. yeah, But yeah, there is also that debate, right? कि मतलब एक बार ही अगर प्लेयर की उम्र होगी, you should know when to move on also from them. yeah, yeah, Same thing is there with Rohit Sharma and Virat Kohli also. yeah, So I think that emotional connect that we have as fans with these players, but that's not how it works, right? Like you have to get new players and blood in new players, and yeah. तभी मतलब आगे बढ़ती है टीम. Otherwise, ये न्यूजीलैंड जैसे टीम आके वाइट वॉश कर देंगे तुम्हें. It's been quite embarrassing. But let's see अभी Yeah. क्या BGT में क्या होता है. मुझे तो लग रहा है भाई बहुत ही गंदी तरह बजने वाली है वहां पे इंडिया की. बट Yeah, लेट्स सी. आई होप let's आई एम hope. रॉन्ग. आई होप Same, आई एम same. रॉन्ग. Yeah, Cool. I think we'll wrap up. Thanks a ton to yeah, everyone who's tuned in. This is our first live stream ever, right? So don't forget to drop a like on this video, drop a comment, and tell us क्या लगता है आपको इंडिया पहुंच पाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और नॉट. And tell us what you think about Gautam Gambhir as a coach. Do you think he has like a lot of time with it? Like he'll get a lot of time, एंड अगर रिजल्ट्स ऐसे ही चलते रहे तो उसको कब तक चांसेस देगी इंडियन मैनेजमेंट. एंड या ऑल्सो टेल अस अबाउट रोहित शर्मा's future, Virat Kohli's future. What do you think about that? And yeah, that's it from us on Ball and Banter. Peace out.